EC2 instance, provisioning a EC2 instance means what? Yeah, virtual machine. Is it to define the storage capacity or to determine the operating system or to specify the hardware resources or to manage the network security groups? Is it storage? Is it operating system or hardware services resources or network security groups? It's a pretty easy question. Right, allocating servers for computing. So basically specifying the hardware resources like CPU, memory for an instance. Okay. It seems that everyone is remembering what all we taught. So let's move towards today's session. Today we are going to learn about the storage and database service of AWS, and we have an expert with us, Ms. Mayuri Kolle. She has extensive experience in cloud computing and passion for teaching as well. So welcome, Mayuri. Yeah, so good evening all, myself Mayuri Kolle. Today we'll be learning with AWS Cloud and Storage Services. So I'll start. Is my screen visible to you all? Yes. Yep. Okay, so let's start with AWS Storage and Database Services. Okay, so why we need cloud storage and database services? So think you are creating one shoes application website. You have your shoes images and the data related to it on your local machine. Now you want to host your application or website on an internet so that other people can access it, but the images means the objects which are related with your website and your database is on your local machine, so other people will can't access it. So for this you need to host your object like images, videos, anything that is in your website along with your database you are using on the cloud server, so everyone sitting at anywhere can access it. So from last 2 days, you must be listening about like why we need cloud storage and all, which are the basic advantages of it. So same advantages are provided by the cloud storage and database services too, like scalability, availability, and durability. Next is these services are cost effective and pay as you go model. Means first you suppose have your data size as 1 GB and later your data increases to 10 GB, then you can gradually increase your storage size and also the cost which you pay. You have to pay only the amount of storage and the database service you are using. And in case if you lost your mobile phones or you lost your laptops, your data will also be lost if you have it on local storage. But if you store it on cloud storage or databases, then basically you will be having the cloud backup of your data and you can access it from anywhere. So tell me, if I say cloud storage, what is the first thing that comes to your mind? Anyone? Like what can be a what a storage can be, or what a cloud storage can be? Can anyone unmute yourself and okay, so when we say about cloud storage, so you have your data in your hard disk or RAM. The same way storage services are like storing your data on cloud in the form of like images, videos, files, anything. So we have four different types of storages. The first one is object storage. So what is object? Basically an object is any entity that can be image, video, anything. And storing an object storage is basically storing your objects on the cloud.
So the service which is provided by AWS for storing the objects is Amazon S3. So you can use S3 for storing your images, videos, files, anything, JSON files or CSV files, and you can access them from anywhere. The next type of storage we have is block storage. Now suppose you have a JSON file which is updated like many times. So what you do, you can't update your file every time you update the file, every time you update the file. So you store that JSON file in the form of block storage. एंड सपोज अभी मैंने लाइन 10 से लेकर 20 तक कुछ अपडेट किया जेसन में, तो जो ब्लॉक होगा मेरा उसमें सिर्फ लाइन 10 से लेकर 20 तक का जो डेटा है वो अपडेट होगा. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इलास्टिसिटी होती है इन ब्लॉक स्टोरेज. नेक्स्ट वी हैव फाइल स्टोरेज. Now suppose you are working in a network of computers which you can basically create using, let's say, EC2. अभी तुम्हारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ कंप्यूटर है और तुम्हें कुछ फाइल्स है या कुछ फोल्डर्स ऑफ हायरार्कियल स्ट्रक्चर है जो सब कंप्यूटर्स पे एक्सेस करना है. तो व्हाट यू विल डू, तो यू विल स्टोर योर फाइल इन द फॉर्म ऑफ फाइल स्टोरेज. सो AWS provide EFS as a file storage service. So every instance which is in your network can access the file from that place. Next we have cold storage. So sometimes you have data which is very less accessible. Let's say your backup data or your archive data. You don't access this data frequently, and also the amount of these type of data is very huge. So for such things we have cold storage types. So let's say so we have S3 Glacier in cold storage type. So what you do in cold storage, you store your data once only, and basically for cold storage you require high efficiency to retrieve the data, and also the cost required for accessing the data is bit more than the normal storage. So these were the 4 different kind of storage that we can do on AWS. So tell me one thing, imagine you lost your laptop today. So what will be your backup plan? How you will retrieve your data? How you will retrieve your images? Can anyone answer? Guys, anyone? You can unmute your mic. Okay, they are writing in chat, so that's why you are not able to access the chat. Yeah, it's okay. I'll let you know on whatever they write. Okay. Yeah. Some people are saying Drive, Google Drive. Yeah, true. So if you have your data in Google Drive, so you can log in again on the same account and you can get your data. So if you lost all your contact, you can log in with your Gmail and you can get back your data. This is one option. And another option is you have to take regular backups on your data on some hard drives or anything. And from there you can basically get your data. But all this is like continuous process. You have to do it manually. So instead of that, you can store your data on cloud, which will get your data automatically backed up. And if any case you lost all your data, you can recover it from that cloud storage device. Okay, so you must have listened about S3. So basically S3 is simple storage service. So what is the main purpose of S3? So using S3 you can store anything in a bucket and you can access it anywhere. So basically you use S3 to store the object. So you must be aware, so you must be thinking that what is this object. So basically an object is nothing but it's your actual file. Let's say it's your image or it's your video or anything. And this object consists of not only your file but some another data too, like the metadata. So metadata will be the other information about your file, like the file type, file extension, file size. Then each object is associated with a unique key, which will be the name of the file. So when you upload any object to your bucket, you can access it using the unique key identifier of that object. So talking about the features of S3, so you can store your data as an object.
So bucket, talking about bucket. So what is a bucket? So basically bucket is a container in S3 which you can use for storing your data. So let's say तुम्हारे पास एक बुक शेल्फ होता है और उस शेल्फ में तुम अपने बुक्स ऐसे रखते हो sections wise. So basically this bucket is nothing but your one bookshelf in which you will arrange your objects. The maximum object size means the maximum file size or image size which you can upload to any bucket will be 5 TB. One important feature of S3 is you can version the object. So let's say मेरी एक database file है जो मैंने अभी upload की. Now next day मेरी वो file में कुछ data मैंने अपडेट किया और मेरे को अभी वो फाइल का नेक्स्ट वर्जन स्टोर करना है. So you can store versioning of objects in S3 too. और ये जो versions होते हैं, so basically जो each object होता है उसको एक version ID भी provided होता है जहाँ से you can access the versions of different files. Next important feature is IAM. So basically IAM is integrity and access management system. So through IAM policies you can set कि तुम्हारा ये bucket public हो या private हो, so anyone can access it, या फिर तुम्हारे कोई same region के people can access it. So you can set some IAM policies too. Next is how S3 works. So I'll show a short video for this, like how S3 works. Okay, so this is the AWS console. You all must be aware about it. So AWS provide different services. So you have to search for S3. Okay, here you have an option to create bucket. Now you will click on create bucket. You have to select the zone in which you want to store your data. Then you have to provide the bucket name. Basically this bucket name should have be the unique bucket name. You can't create two buckets with same name. Then you can set the other policies to it, like you can block the public access, means you can make your bucket private or you can make it public through this. Next you can enable versioning, like you want to store the versions or not. Then you can also add some encryption to your objects, and also you can lock your objects, and then hence on clicking on create bucket, basically you have your bucket created. Now if you try to create the bucket with same name again, it will give you the error, as the bucket name should be unique always. Now you can upload images or anything to your bucket using this add files or add folder button. You can directly upload whole folder also, or you can manually add files too, or you can drag and drop them also. So this is how you upload it, and after you upload it, you can view all the objects in your bucket here. Next, you can delete your bucket too. If you directly click on deleting the bucket, it will not delete it as you have objects in your bucket. So you have to first remove all the objects and then you can try deleting your bucket. So you must be thinking like अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट मेरा अपलोड कर दिया पर मैं उसको एक्सेस किस फॉर्मेट में कर पाऊंगा. तो जब भी तुम कोई ऑब्जेक्ट S3 में अपलोड करते हो तो S3 एक ऑब्जेक्ट URL प्रोवाइड करता है. बेसिकली उसका फॉर्मेट होता है HTTPS, फिर तुम्हारी बकेट का नाम .S3, फिर जिस जोन में तुमने तुम्हारा बकेट स्टोर किया है वो .amazon AWS और स्लैश और तुम्हारा जो भी यूनिक ऑब्जेक्ट का नाम होगा वो. So talking about in short the key highlights of S3 is S3 provide you unlimited storage. You can store up to petabytes of data in S3. S3 has like S3 provide you consistent data storage. You can store your data and you can access it after read and write too. It has cost optimization, like suppose अभी तुम्हारे 100 objects है, so you have to pay for only 100 objects, and as your number of objects increases, your bill means costing will also increase. Next we have security and compliance, which we can set through different IAM roles. So this is all about S3. So you guys, I have one question for you guys.
What is the maximum size of single object which you can store in S3? Options are 1 TB, 2 TB, 5 TB and 10 TB. You must be having a poll in your chat. You can answer there too. Yeah, 5 TB people are answering it correct. Okay, now let's go ahead. So I have one more question for you. If you are running a photo sharing app, which storage service you can use to store the images and why you will use it? Why जाने दो, बस ये बताओ कि तुम्हें फोटोज स्टोर कर रहे हो तो तुम कौन सी स्टोरेज सर्विस यूज करोगे? Of course S3, because recently हमने S3 के बारे में ही पढ़ा. So let's move forward towards the next services. So now we have Amazon EBS, which is Elastic Block Storage. So consider this as your cloud hard drive. So why we need to use EBS? So basically EBS is used for storing the block storage data. Now what is a block here? So you can consider block as any big file, let's say a backup database file, which you don't update whole file at a time, you update some part of it. And now you can't afford like updating the whole file on cloud again, as you will require a cost for it. So what EBS will provide you, the part of file which is updated, only that lines from the file or that section from the file will be updated. So in which case you use EBS? So you use EBS if you have like low latency needed. What kind of data basically you store in your EBS? So you can say snapshots or backup or your archive data. So EBS also provides us encryption and security, as like we have IAM roles in EBS. Similarly, we have KMS encryption for our data in EBS. So how this EBS works? So basically you have one EC2 instance. So you create one EBS volume. A volume is what? So जैसे S3 में bucket होते हैं, वैसे EBS में volumes होते हैं. So you attach your EC2 का instance to your EBS का volume. So अभी तुम EBS के साथ क्या क्या manipulations कर सकते हो? So जब भी तुम्हें needed हो कोई file system की, तो तब तुम उसे mount कर सकते हो. If you don't need it at all, then you can format it. अभी सपोज करो कि तुम्हारा पहले डेटा था 100 GB का, सो तुमने EBS का वॉल्यूम बनाया 100 GB का. नाउ योर डेटा इंक्रीजेस टू 100 TB. सो ये जो EBS के वॉल्यूम्स होते हैं, you can modify their size and scale them according to your need to. So basically you use EBS in case of like databases, you have to boost your volume, or enterprise application which basically require high speed storage. In that case you use block storage service. Next we have EFS. So consider you have multiple EC2 instances. Now you want to share some files on all those EC2 instances. So what you will do, where you will store your files? So the service which is provided by AWS is Amazon EFS. So basically this EFS is a shared cloud file system. You can store all your files in hierarchical manner, like folders के अंदर folders, and all the people who are connected, means all the EC2 instances can access it simultaneously. So why we use EFS? So basically EFS is also elastic and scalable. You can grow and shrink it automatically based on your file size. Multiple instance access means multiple EC2 instances, like multiple computers which you have can access the same EFS volume. It has built-in high availability, like the data is replicated across multiple availability zone, and you can always access your data. Your file system is never down. And like as AWS is secure and compliance, so EFS is also secured. You can set the IAM permission, like which EC2 instance can access it. You can set the roles, like who will be admin and all. You can also encrypt your data if needed.
So this is the use of EFS. Next is like how basically EFS works. So you have to set up a EFS file system, which you can set up either using the AWS console or the AWS or CLI, which the AWS provides. Then you have to configure the settings like performance, encryption, access point. You have to set the IAM policies too. Then you have to mount your EC2 instances, like which EC2 instances can basically access that EFS system. So you can set it to multiple also. And so hence you will be having your EFS and EC2 instances set up, and multiple people can write, read files collaboratively at a same file system place. So this is about EFS, which is a shared cloud file system. So tell me, like, if you have, which AWS storage provides low latency block storage for a single EC2 instance? So you required some low latency block storage. Which AWS service you will use? Amazon EFS, EKS, S3 or EDS? Someone, guys, please answer. Okay, so like to store a low latency block storage in single EC2 instance, you basically use Amazon EBS. Okay. So next up we have comparison of S3, EBS and EFS. Like when you have to use S3, when you have to use block storage, or when you have to use file storage. So if you have your data type as image, files, image, videos or anything, then in that case you have to use Amazon S3. If you have your data as a large volumable data, which will be basically you require high storage for it, at that time you have to use block storage. And you, if you want a shared file storage service, at that time you have to use EFS. So the access method, so S3 provide HTTP or HTTPS, so you can access the S3K objects using REST API. How you can access the block storage? So you have to attach your EC2 instance, means your virtual machine, to your block storage to access it. And how you can access the file storage? So you have to mount it on your different EC2 instances. Talking about the scalability feature, so S3 has virtually unlimited space. You can upload as many objects you want or you desired on S3. Whereas EBS has 16 TIB scalability to a volume. Like a one volume can only store blocks up till 16 TIB. And EFS, which is a file storage service. So this is elastic and it can scale automatically as your files or number of files increases. Talking about the performance, so S3 is good when you have large files or archive files. You use EBS if you require high speed read and write for your virtual machine instance. And if you required a shared access, at that time you have to use EFS. So talking about the use cases of S3, then we have backup or any static website hosting. In that case, you can use S3. So EBS can be used for like databases, booting volumes or storing your apps. And you can use EFS in your like CMS, so customer management system, where you have to access the same files or some multi-server environments. In that case, you can use EFS. So this is all about the storage services of which are provided by AWS, like how you can use them to store your objects, anything which you want on cloud. So tell me one thing, which AWS storage option is best suited for unstructured data like images, videos or backups?
Yeah, correct. S3 is the right option. So basically you can use S3 for unstructured data. Okay. Next up we have different database services. Now अभी तुमने तुम्हारे जो भी वेबसाइट के या एप्लीकेशन के एसेट्स थे, so जो हमारा एग्जांपल था शू वेबसाइट, तो उसके जो भी इमेजेस थे वो तो अभी तुमने क्लाउड पे स्टोर कर लिए, so multiple people can access it. बट अभी तुम्हारा जो डेटाबेस है, so तुम्हारे डेटाबेस में स्टोर है तुम्हारे डिफरेंट शूज के टाइप्स या फिर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शूज, अभी वो तुम्हारे लोकल पे है. Now you are hosting your website on cloud so that people can access it. So तुम्हारा जो database है, which can be Oracle, SQL, MongoDB, Postgres, anything, वो भी तो cloud पे होना चाहिए ना, so that people can query it using API and access the data. So we use AWS database services for this purpose. सो डेटाबेस इन द क्लाउड मतलब वो पहले तो स्केलेबल होना चाहिए, मतलब एज योर डेटा इंक्रीजेस इट शुड स्केल, और सिक्योर भी होना चाहिए बिकॉज डेटा क्लाउड में है तो डेटा लीक नहीं होना चाहिए एंड ऑल दिस फीचर्स. सो AWS provide different services like RDS, DynamoDB, Redshift, etc. for these purposes. You can store your SQL data and your NoSQL data both in on cloud in the services provided by AWS. So different popular AWS services are like Amazon RDS, which you can use for storing your SQL data, means your structured data. Then DynamoDB for storing your non-structured data. Then we have Amazon Aurora, Amazon Redshift, and Amazon DocumentDB. So now let's explore different database services. So we have the first database service as Amazon RDS. So can anyone tell me like what is relational database? Can anyone just unmute your mic or type in the chat like why we use relational databases? Anyone? Okay, I'll tell the answer. So what is basically a relational database? So in relational databases, you have your data in the form of table. So let's say मेरे पास एक user का table है, एक मेरा shoes का table है, एक मेरे shoes के कुछ colors का एक picture है, उसका table है. Now relational refer to कि ये जो table है, इन सब table के बीच में कुछ तो connection है. जैसे कि मेरे पास एक ऑर्डर का टेबल है, सो ऑर्डर टेबल विल बी कनेक्टेड टू यूजर टेबल कि यूजर ने कौन कौन से ऑर्डर किए हैं. सो यू कैन हैव योर रिलेशन इन दिस डेटाबेस. सो बेसिकली दिस इज अ रिलेशनल डेटाबेस. सो अमेजॉन प्रोवाइड, सो तुम अपने प्रोजेक्ट्स में एसक्यूएल यूज करते होंगे, पोस्टग्रेस यूज करते होंगे या ओरेकल यूज करते होंगे टू स्टोर योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल. तो ये तुम्हारे लोकल पे होते हैं. नाउ तुम्हें क्लाउड पे अगर इसे होस्ट करना है तो अमेजॉन प्रोवाइड RDS which is a relational database system to host your databases. So talking about the feature of RDS, so it provides automate scaling and backup. तो सपोज अभी तुम्हारा पहले का जो डेटाबेस था उसमें सिर्फ 100 एंट्रीज थे, तो तब तुम्हारा डेटाबेस की साइज छोटी थी, and now your number of entries or number of rows increases to let's say 1000. So in that case your database will scale automatically. And also RDS में तुम्हारा जो database है उसका backup भी होता है. So in case if you run the query like drop table और तुम्हारे table का नहीं, तो तुम्हारा सारा data loss हो जाता है. So in that case RDS provide you the backup service also. You can backup your data from there. So why you have to use RDS? कि RDS ही क्यों यूज करना है? तो it provide you backup, replication and monitoring. So replication means कि तुम्हारा जो डेटा है उसके replicas अमेजॉन के अलग अलग रीजन्स में क्रिएटेड होते हैं. सो कभी तुम्हें लाइक ऐसा नहीं आता कि तुम्हारा डेटाबेस सर्वर डाउन है. यू ऑलवेज गेट योर डेटा व्हेन यू नीड इट. इट हैज लाइक हाई अवेलेबिलिटी विद मल्टीपल जोन डिप्लॉयमेंट, जो मैंने अभी बताया कि कभी तुम API हिट करोगे तो वो तुम्हें ऐसे नहीं बताएगा कि सर्वर डाउन है. सो इफ वन सर्वर गेट्स शट डाउन इट विल डिप्लॉय यू, इट विल basically feed you your data from some another zone deployment. And same, it has pay as you grow
पे एज यू गो प्राइसिंग। सो पहले अगर तुम्हारा कम डेटा था तो तुम्हारे पास जितना डेटा है सिर्फ उतने के लिए तुम पे करोगे, एंड इफ तुम्हारा इंक्रीज हुआ तो यू विल पे मोर। टॉकिंग अबाउट द यूज केसेस, सो तुम आरडीएस किस केस में यूज कर सकते हो? तो तुम्हारी कोई वेबसाइट है या फिर कोई छोटा सा ऐप है, उस केस में तुम आरडीएस यूज कर सकते हो, या फिर कुछ एंटरप्राइज के एप्लीकेशन है, वहां पे भी यू कैन यूज आरडीएस एज योर डेटाबेस। आई विल शो यू वन डेमो वीडियो फॉर दिस कि लाइक आरडीएस कैसे काम करता है एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन इट। तो सिमिलर सर्विसेज में हम सर्च करेंगे आरडीएस। Someone has unmuted. Mute yourself. हाँ, तो सिमिलरली दिस इज आवर AWS कंसोल। यहाँ पे हम सर्विस सर्च करेंगे। तो जैसे पहले आपने S3 किया था, नाउ यू विल सर्च RDS. So RDS provide you different type of databases, like तुम MySQL बना सकते हो, Postgres बना सकते हो, Oracle बना सकते हो। Now for a demo हम Postgres SQL बनाते हैं। तो ये तुम्हारा डेटाबेस बन गया। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द वर्जन, सो यू हैव टू सिलेक्ट द लाइक डेव है, prod है, कौन सा वर्जन है। यू हैव टू गिव द डेटाबेस नेम, यू कैन सेट द क्रेडेंशियल्स लाइक पासवर्ड एंड ऑल फॉर योर डेटाबेस का कनेक्शन, यू हैव टू enter it. Then you can set some initial configurations too. You can basically allocate some standard size to it, and later you can increase if needed. You can make your database public or private, like you can set the IAM policies too. Then you can select the zone in which you want to host your database, and like you can also set the port. So port is required, like हम जब कोई डेटाबेस बनाते हैं और उसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है तो उसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग और उसका पोर्ट। सो तुम पोर्ट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, and some more additional configuration too, and you click on create database. So in this way your database will get created. Now how you can connect to this database? Like after your database is created, इसका ये तुम्हें एक कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है, विच विल बी बेसिकली योर कनेक्शन स्ट्रिंग, एंड यू कैन हिट दिस एंड पॉइंट। सो अभी हम पीजी एडमिन में जाएंगे, वहां पे आई विल सेट अप अ सर्वर जिसमें मैं कनेक्शन स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग मुझे आरडीएस ने प्रोवाइड की है वो पास करूंगी। देन आई विल सेट द पोर्ट एज जो पोर्ट मैंने उधर पास किया था, और मैं अपना पासवर्ड टाइप करूंगी, एंड आई विल गेट कनेक्टेड टू इट on my PG admin. और यहाँ पे फिर you can create database, you can add data to it. So in this way, this is how the RDS basically works. Anyone has any doubt in RDS? We are good to go. Okay. Next we have NoSQL. So can anyone tell me what is the main difference between SQL and NoSQL databases? What is SQL and what is NoSQL? Someone, can you please enter the answer in chat? Okay, so I'll tell you. So in SQL databases you have your data in the form of tables, और वहाँ पे तुम्हारा जो schema होता है, मतलब तुम्हारा जो tables होता है उसके जो fields होते हैं वो fixed होते हैं, you can't change them once you create your fixed table. And basically NoSQL जो होता है वो एक like JSON format का database होता है, you can store your data in the form of like JSON के formats, and you can, और जो तुम्हारा डेटा होता है वो की और वैल्यू पेयर में होता है, और यू कैन सी इट हियर कि तुम्हारे NoSQL डेटा में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और डॉक्यूमेंट में यू हैव योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइक की वैल्यू पेयर्स। और सपोज अभी मेरा कोई डॉक्यूमेंट है उसमें 3 ही कीज है, और मैं अगला डॉक्यूमेंट बनाना चाहती हूँ जिसमें मेरे को 10 एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो आई कैन सेट दैट टू, as NoSQL data has no fixed schema. So this is one advantage of NoSQL over SQL.
तो यू मस्ट बी कंफ्यूज अबाउट लाइक एसक्यूएल कब यूज करना है, नो एसक्यूएल कब यूज करना होता है. सो यू कैन यूज एसक्यूएल जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा डेटा फिक्स्ड है, और एंड यू कैन यूज नो एसक्यूएल जब तुम्हारा डेटा इज लाइक रैंडम है और योर डेटा इज मोर और इंक्रीजिंग इन साइज. So AWS provide a service called DynamoDB, which is a like NoSQL key value based database. So NoSQL में भी multiple types of databases होते हैं, जैसे कि document वाला एक होता है, key value वाला एक होता है, graph वाला होता है. So in this way, DynamoDB is a key value type of database. Also, in the talking about the features of DynamoDB, then this is a single digit multi-second latency. So if you hit any request to get, post or delete data, so you will get your query done in like single millisecond. So latency is very feature provided by DynamoDB. Then again we have automatic scaling and global replication, like कि तुम्हारा data increase हुआ तो वो automatic scale होगा और हमेशा available होगा तुम्हारा data. तुम्हें कभी server down या database not found, मतलब database is down, ये वाले जो options होते हैं, ये वाले जो API responses होते हैं वो नहीं मिलेंगे. Next we have built-in security and encryption, जो कि हम सेट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट IAM रूल्स, और लाइक हम पब्लिक प्राइवेट ये सब भी पॉलिसी सेट कर सकते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट फीचर इज दिस इज सर्वरलेस, मतलब कि तुम्हारा कोई एक सेंट्रल सर्वर नहीं होता है. जैसे कि अगर एक सेंट्रल सर्वर हुआ और वही डाउन हो गया तो जो सारे थिंग्स या फिर सारे कंप्यूटर्स उस सर्वर को कनेक्टेड है वो भी डाउन हो जाते हैं क्योंकि उनको डेटा मिल ही नहीं पाता. सो दिस इज सर्वरलेस, यहाँ पे कोई एक सेंट्रल सर्वर नहीं है. So why you have to use DynamoDB? So it is like high speed provide करता है, event driven architecture होता है, and DynamoDB can handle like millions of requests per second. कि suppose अभी तुम्हारा कोई e-commerce platform है जिसको at a time thousand of users access कर रहे हैं, तो millions of requests जाएंगे. So DynamoDB can handle it seamlessly. I'll show you a demo of DynamoDB too, कि how we can create a key value pair database. So AWS के console पे you have an option to create a table in DynamoDB. You can provide a partition key. So basically partition key will act as a primary key in your table, जो SQL में होता है. Next you can also set a sort key. So ये sort key क्या होगा कि तुम अपने डेटा को इसके हिसाब से sort करोगे. So let's say तुम्हारा एक शूज की वेबसाइट है तो उसमें जो ऑर्डर आईडी होगा तुम उसको प्राइमरी की बना दोगे कि तुम ईच ऑर्डर को ये ऑर्डर आईडी से आइडेंटिफाई करोगे. और टू सॉर्ट योर शूज तुम एक की सेट कर सकते हो, लेट्स से क्रिएशन डेट. यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द सेटिंग्स लाइक कि तुम ऑटो स्केलिंग ऑन या ऑफ रख सकते हो, तुम उसका राइटिंग का कैपेसिटी सेट कर सकते हो, देन इंक्रिप्शन ऐड कर सकते हो, सिक्योरिटी ऐड कर सकते हो. In this way you can create your table. अभी table तो create हो गया. Now if you click on it you will see the multiple options which are provided, like कि तुम table में indexes set कर सकते हो, you can monitor, you can have backup all your data. So all these things are provided by DynamoDB. नाउ टॉकिंग अबाउट कि अभी मुझे मेरे ये जो DynamoDB था इसमें कोई नया आइटम इंसर्ट करना है, तो मेरा जो ऑर्डर्स टेबल था अभी मुझे इसमें नई डॉक्यूमेंट इंसर्ट करनी है. सो आई क्लिक ऑन क्रिएट आइटम एंड दिस इज अ लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जेसन. तो इसके ये जेसन के फॉर्म में यहाँ पे अपना डेटा डाल सकते हो. अभी इनिशियली हमने सिर्फ 2 ही फील्ड्स सेट करे थे कि ऑर्डर आईडी और क्रिएशन डेट. सो यू कैन एंटर दिस फील्ड, और अगर तुम्हें जेसन के फॉर्मेट में नहीं डालना है सो यू कैन क्लिक ऑन दिस फॉर्म बटन और तुम यहाँ से भी अपना डेटा इसमें पुट कर सकते हो. इफ यू क्लिक ऑन क्रिएट आइटम तो तुम्हारा जो डेटा है वो तुम्हारे DynamoDB में इंसर्ट हो जाएगा, मतलब एक नई डॉक्यूमेंट बन चुकी होगी. यू कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू एट्रीब्यूट्स, लाइक सपोज अभी मेरे को क्रिएशन डेट चाहिए तो मैं उसका नया एट्रीब्यूट बना सकती हूँ, टाइप सेट कर सकती हूँ, कुछ कंडीशन सेट कर सकती हूँ, कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकती हूँ, एंड आई कैन रन माई क्वेरी और मैं कुछ नई फील्ड ऐड कर सकती हूँ.
So you can also delete the table. So in this way, you can have your DynamoDB. Okay, so when we use this DynamoDB, जैसे मैंने बोला कि SQL हम यूज करते थे जब तुम्हारा डेटा फिक्स्ड होता था. So you use DynamoDB when you have like real time data. So streaming applications हो गए, जैसे Netflix हो गया, तुम्हारा जो डिज्नी हॉटस्टार होता है वो हो गया. तो यहाँ पे यू हैव लाइक रियल टाइम डेटा चेंज होते रहता है. कुछ मूवीज के एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं, कुछ मूवीज में अलग होते हैं. सो यू हैव रियल टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. सो इन दैट केस यू कैन यूज DynamoDB. IoT के जो एप्लीकेशन होते हैं वहां पे भी यू कैन यूज. जो सेशन एंड यूजर मैनेजमेंट होता है वहां पे भी यू कैन यूज DynamoDB. आई मीन key value based database. So DynamoDB is your choice if you want a fast, scalable and serverless NoSQL workload. In that case, you can use DynamoDB. So I have a question for all of you. Which AWS service you will use which is fully managed and supports SQL based relational databases? What you will use in that case? DynamoDB, Elastic Cache, RDS or Redshift? Yeah, true. If we have like fully managed or and relational database, in that case we use Amazon RDS. So yeah, this was all about the different storage services and database services which were provided by Amazon. Now we are open to question. If you have any question, you can ask, guys. Hello. Anyone having any doubt in any question? Sorry, any topic or service? Yep. You can also unmute yourself if you want. Someone said, can you explain the DynamoDB video again? You are unmuted. So you're on mute. Yep. Yeah, I'll explain it again. So basically like DynamoDB में क्या होता है, you have different टेबल्स और जो टेबल्स के अंदर तुम्हारा डेटा स्टोर होता है वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में. मतलब जेसन का तुम्हें स्ट्रक्चर पता होगा कि एक की होती है और एक वैल्यू होती है. सो इन दैट फॉर्मेट तुम्हारा DynamoDB में डेटा स्टोर होता है. तो फर्स्ट यू क्लिक ऑन क्रिएट टेबल हियर फ्रॉम AWS कंसोल. तुम टेबल को कोई नाम दोगे, पार्टीशन की असाइन करोगे. सो ये पार्टीशन की क्या होता है, ये तुम्हारे टेबल की एक प्राइमरी की होती है. सो प्राइमरी की मतलब क्या, कि एक यूनिक एट्रीब्यूट जो सब डॉक्यूमेंट्स में होगा जिससे तुम डॉक्यूमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकोगे. जैसे अभी तुम्हारे पास 100 ऑर्डर्स है तो कौन सा ऑर्डर मेरा है, कौन सा ऑर्डर हिमांशु का है, कौन सा ऑर्डर शिवम का है. ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर ऑर्डर को एक आईडी हम असाइन करेंगे. सो विच यू विल प्रोवाइड इट इन योर पार्टीशन की. नेक्स्ट वी हैव सॉर्ट की. सो दिस इज अ ऑप्शनल की. अगर तुम्हें तुम्हारा डेटा कभी जरूरत है सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए तो यू कैन यूज दिस की बेसिकली टू सॉर्ट योर डेटा. And next we can customize the settings too, like you can set the auto scaling on and off, you can set the maximum size of your database. Also you can set some encryption policies too. And in this way, by clicking on create table, your basic table will be created. Now your table is created here. If you go to it, तो AWS अलग अलग ऑप्शंस, मतलब DynamoDB अलग अलग सर्विस ऑप्शन प्रोवाइड करता है. जैसे तुम इंडेक्स सेट कर सकते हो. तो इंडेक्स तुम किस लिए यूज करते हो, जैसे बुक में हमारा इंडेक्स होता है कि हम ढूंढते हैं कि मेरे को अभी आर नाम का कोई वर्ड चाहिए डिक्शनरी से, तो आई सर्च आर कौन सी पेज पे है. सो इन द सेम वे इंडेक्सेस वर्क.
सो तुम यहाँ से इंडेक्सेस भी क्रिएट कर सकते हो अपने डेटा पे। यहाँ से तुम मॉनिटर कर सकते हो कि डेटा का एवरेज रीड टाइम कितना है, एवरेज राइट टाइम कितना है, थ्रॉटलिंग कितना हो रहा है, लेटेंसी है या नहीं, वो सब तुम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। देन दिस इज द ग्लोबल टेबल, लाइक हमारा डेटा हमेशा अवेलेबल होता है तो उसकी कुछ रेप्लिकास क्रिएटेड हो सकती है, तो तुम उसे यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव बैकअप्स। तो अभी तुम तुम्हारे डेटाबेस का लाइक ऑन टाइम बैकअप भी लेके रख सकते हो। इन सम फेल्योर केस यू कैन recover your database ka backup from here. So this is the one feature provided by DynamoDB. And next we have like exports and streams. यहाँ से तुम अपना डेटा जो डेटाबेस का डेटा है वो डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी तुम्हें टेबल तो बन गया, अभी टेबल में तुम्हें इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्मेट में होगा? की और वैल्यू पेयर पे। अभी तुम ये क्रिएट आइटम के बटन पे जब क्लिक करोगे तो एक जेसन फॉर्मेट में तुम्हारे सामने एक व्यू आ जाएगा। तो इसमें फिलहाल 2 फील्ड्स है जो हमने ऐड किए थे, तो यहाँ पे तुम उसके सामने उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। अगर तुम फॉर्म पे क्लिक करोगे तो मतलब फॉर्म के फॉर्मेट में तुम यू कैन असाइन द डेटा, और तुम क्रिएट आइटम पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये आइटम क्रिएट हो चुका होगा। ओके, नाउ तुम्हारा जो डीबी था उसमें 2 ही फील्ड्स थे, नाउ तुम्हें कुछ नए फील्ड्स ऐड करने हैं। सो यहाँ पे यू कैन प्रोवाइड द एट्रीब्यूट नेम। तुम उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, तुम उसको कुछ कंडीशन लगा सकते हो कि सपोज अभी प्राइस है, सपोज रेट से रेटिंग्स है तो रेटिंग हमेशा लेस देन मतलब 1 to 5 के बीच में होने चाहिए, ऐसी कंडीशन सेट कर सकते हो, कुछ वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। सो दीज आर लाइक ऑल द थिंग्स विच यू कैन सेट फ्रॉम देयर। या, सो योर डाउट इज रिजॉल्व्ड, आई होप। सार्थक। Yes. Anything else? Okay. I think this is okay then. कुछ general questions रहेगा तो you can definitely ask again. General questions regarding cloud or the club in general. Okay. Shraddha, please. Yep. Yes. Okay, so the hashtag is shared on the screen. Don't forget to post your learnings using this hashtag on your socials. We are towards the end of day 3 today. Thank you, Mayuri, for breaking down the concepts on storage and databases in AWS in such a great manner. Yeah, thank you everyone. And if you have any doubt, you can like post it on group or anywhere. We'll surely resolve all your doubts. Yeah. Yes, and also for if you want the recordings and the presentation links, so that has been shared on the group on the email too. If you didn't get it, you can ask it here. And yes, you can see the recordings. We have a YouTube channel, so you can access the recordings through there. And we have a presentation drive link which you can use. Okay. Can we conclude the meeting today? Yes, we can. Thank you all for joining. Tomorrow we will be diving deeper into networking in AWS. Thank you. Cool. Thank you. Yeah, thank you all.